Hello everyone, a very warm welcome for this beautiful EFT series. Okay, so this is Meena Soni here, and I'm going to help you to attract money in so many different and very easy ways. So, are you ready to attract money with me? If yes, then comment below yes. आज का हमारा टॉपिक है, बहुत लोगों को लगता है कि जब पैसे जिनके पास होते हैं उनके पास बीमारियां भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज मेंशन जरूर कीजिए कि हाँ आपको भी लगता है। तो मैं आपको आज हेल्प करने वाली हूँ ईएफटी और होपोनोपोनो के थ्रू कि किस प्रकार आपका ये लिमिटिंग बिलीफ भी चला जाएगा कि जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है, 3 से 4 सेट पे करना है। तो मैं एक सेट आपको यहाँ पे करके दे रही हूँ, आप इसको रिपीट फॉर्म में जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ये कराटे चौक है तो इसको हम टैपिंग करना शुरू करेंगे। आप कोई भी हाथ प्रयोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट सेइंग, इवन दो आई हैव अ फीलिंग दैट मनी ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिजीजेस। If a person has a lot of money, that money brings diseases. But still, I choose to love and accept myself. Even though I have a feeling that money brings so dangerous diseases, right? Like cancer and the other things. But still, I love and I choose myself to be respected and to accept myself. Even though I have a very deep, dense, this feeling in deep in my heart, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े लोग, उनके घर में कोई भी स्वस्थ नहीं रहता, कोई ना कोई तो बीमार रहता ही है। इफ आई हैव दिस फीलिंग टुडे, आई चूज टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, बिकॉज I know I can change and transform this belief system with EFT. So today, I choose to release the limiting belief of money brings a lot of diseases. I release this limiting belief that money brings diseases. I release this feeling that money brings a lot of diseases. I release that money brings a lot of diseases, and whenever the money comes, it brings a lot of challenges for the related to the health. I release this feeling that money comes and brings a lot of unknowingly, knowingly, lot of diseases in different name. I choose to release it because I know that money is my friend. Money never comes with this intention that if I'm going to this person's house or this person's life so that I bring the negativity. It is my belief, and today I'm releasing it with love and regard. I choose to be so confident about money that money is my friend. I choose that money brings happiness. I choose that money brings success. I choose that when money comes, a lot of blessings are coming all together, which helps not only in the physical world, but also helping in the spiritual world also. I choose to believe in that money brings a lot of positivity and also lots of happiness. Money brings the clarity about that money is a beautiful energy. It's Ma Lakshmi. And a mother cannot give diseases to his or her children, right? So I release this negativity and I choose to be so healthy. I choose that whenever money comes to me, I'm becoming super healthier. Whenever money comes to me, whenever I talk about money, I feel so healthy. Whenever I talk about money, I always talk about its positivity. And I feel super confident and super healthy. Wherever money talks are going on and I interrupt, I interfere, I always say, money is a blessing. Money brings a lot of positivity, lot of way to eat healthy, to live healthy life. And I choose to be healthier. I choose to be perfect fit. I choose to be super energetic with money. I bring money with this intention that money comes and brings lot of positivity. Money is a blessing.
I choose to this keep this feeling that money brings positivity. Money is abundant. Money is God, and money brings so much of power to live a healthy life. I choose it, I recommend it, and I believe it. Said money is a wonderful energy, and when it comes with a lot of positivity. Now take a deep breath in, hold, and breathe out. Thank you so much, everyone, for listening to this. And please try this because this is really going to help you a lot. Believe me. आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं पैसों को लेकर के, इस सीरीज को यदि आप एक एक करके सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपके पास जो भी इनमें से डाउट्स हैं, जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इन सारे सीरीज में से जो आपको चूज करना, आप चूज कीजिए और उस पर कम से कम आप 21 दिन काम कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि सबको पैसा चाहिए और सब पैसा डिजर्व करते हैं बिकॉज मनी इज एन एनर्जी. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ हैप्पी मनी लाइफ.